Welcome to my channel Akhand Classes with another video from biomolecules on the topic lipid. आज हम लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, लिपिड्स क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स बी स्टार्ट द टॉपिक लिपिड. लिपिड को पहले क्लासिफाइड किया गया है. लिपिड्स 3 टाइप्स के होते हैं. लिपिड्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड. कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, कहीं कहीं आपको कंपाउंड लिपिड भी देखने मिलेगा. और जो थर्ड होता है वो डिराइव्ड लिपिड होता है. डिराइव्ड लिपिड. लिपिड्स आर ester of fatty acid and alcohol. लिपिड्स एस्टर होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के. और लिपिड्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अल्कोहल. Simple lipids again divide into 2 forms. And waxes. Now, what is true lipid? Then true lipids are the lipids in which the fatty acids and glycerol, which is a type of alcohol, is used, then it is known as true lipids. Whether if the waxes fatty acids plus alcohol, glycerol, any types of alcohol if used with fatty acid and it is wax, and if fatty acids bind with glycerol, a types of alcohol, then this is known as true lipids. And if fatty acids bind with alcohol other than glycerol, then it is wax. There are 2 types of lipids: simple lipids, true, and waxes. Or other than glycerol. Conjugated lipids and derived lipids will describe into another videos. In this video I will describe only about the lipids, simple lipids. So simple lipids are made from fatty acids and alcohol. So here I am going to draw the structure of fatty acid and glycerol. CH2OH, CH2OH. This is the structure of glycerol. COOHR, HCOOR2 and R3. These are the 3 fatty acids, and this is the 3 fatty acids. When these fatty acids join with glycerol, they form lipids. How they form the lipids? CH2
this hydroxyls and this hydrogens join together and form one molecules of water. So here is hydrolysis taking place. CH2 OOCR1, CH2 OOCR1, again CHOOCR2, CH2 both join together and form one molecule of triglyceride lipid, and this form a ester bond. This form ester bond. This one is the ester bond. Ester bond made between the alcohol hydroxyls and acid hydrogen. And this is the structure of lipid. In this lipid, the glycerol molecules join with 3 fatty acids. So this is known as triglyceride fatty acids. Depending on the fatty acid, there are 3 types of lipids: monoglycerides, diglycerides, triglyceride. Mono means if one molecules of fatty acid is present, then monoglycerides. If one fatty acids plus glycerol, then is monoglycerides. If 2 molecules of fatty acids plus glycerol, then it is diglycerides. And if the 3 molecules of fatty acid and 1 molecules of glycerol is joined together, then it is known as triglycerides. If only one fatty acid joins, then it is known as monoglyceride. This is the structure of monoglycerides, and earlier I have drawn about the triglycerides. This one monoglycerides. So depending on the fatty acid, number of fatty acids, there are 3 types of glycerides: monoglyceride, diglycerides and triglycerides. इस तरीके से लिपिड्स में 2 पार्ट हो जाते हैं. Then lipids is made up from glycerol and plus fatty acids. In which glycerol part is hydrophobic in nature. It is hydrophobic nature, and the fatty acid is hydrophilic in nature. Fatty lipids are amphipathic in nature because in this molecules, hydrophobic and hydrophilic, both part is found in a single molecule. True lipids को further divide किया जाता है saturated and unsaturated lipids में. Saturated and unsaturated lipids.
सैचुरेटेड ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल में जो फैटी एसिड बाइंड हो वो फैटी एसिड्स सैचुरेटेड हो, मतलब ऑल फैट सैचुरेटेड फैटी एसिड हो। वहीं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ग्लिसरॉल अनसैचुरेटेड ग्लिसरॉल और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जानते ही हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड मिले। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें डबल बॉन्ड्स मिले तो उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इस तरीके से ये आज का वीडियो कंप्लीट सिंपल लिपिड्स के बारे में था। सिंपल लिपिड्स को कहीं simple lipids go on depending on the melting points also divided into two parts. Lipids are also depending on the melting points, they are known as fats and oils. फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वहीं आयल्स का मेल्टिंग पॉइंट स्लो होता है। Then this is all about the simple lipids. In next video I will discuss about conjugated lipids and derived lipids. Thank you.